Welcome everyone. Good evening all. Welcome everyone. Welcome to Physics Wallah. OPSC Wallah को समस्त को स्वागत. अच्छा. जेमती in every rituals that आमे जेमती geomorphology follow करछ आज भी सेमती geomorphology बहुत बढ़िया गोटे chapter. It's very interesting, right? Glacial landforms रे पढिया. ता पूर्वरु जस्ट किछि जिंस हम हाइलाइट करिवि कि जब वर्तमान जो प्रतिज्ञा दिवस हमर चलछि यूपीएससी रो तो सही अनुसार वी हैव फिजिक्स वाला तरफ वी आर प्रोवाइडिंग द 80% फ्लैट ऑफर्स एंड दैट बेसिकली जदि देखिबा कि जदि रिगार्डिंग लेट मी कम फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दैट इज योर ओसीएस लेवल रे दैट इज सर्व सक्षम बैच जोटा 2.0 दैट इज योर 3499 that is जोटा कि actual price your nearly your 10,000 10k thila that is only 4k and if you go for the Aakrosh batch eta bi OCS ra and that is for the prelims crash course that is 2024 and another is unity integrated that is also OCS. So OCS ra ette guda batch am eti dekhuchanti, okay, and that to be if you go for the Aakrosh batch which is only 999 and if you go to the unity integrated that is 1999, right? So next जदि देखियो OCS छडा अलगा कोन कोन दिया होछ अलगा जदि हम देखिबा अनुभाग जोटा ASO पई that is 799 and देखिबा अध्ययन OSSC CGL पे that is 699 and आ गुटे जोटा हला संपन्न RI AMIN that is 699. गवर्नमेंट एक्चुअली थाए कोन कि जो गवर्नमेंट जॉब समस्त को पई गुटे ड्रीम थाए हला गवर्नमेंट ऑफिसर होबा पे एंड सेही जिंसडा को सपना को साकार करिया पे physics वाला तरफ this is an revolutionary steps that competitive exams that everyone can access. ठीक है जी. Normally जदि हम बाहर देखिबा yes प्रणाम मंजुलता, how are you? मितांजलि okay God bless, okay welcome Soria, welcome. So जदि हम देखिबा कि गवर्नमेंट एग्जाम्स गोटे समस्त स्वप्न था एंड गवर्नमेंट एग्जाम समस्त अफोर्ड करि परंतनी इट इज बिकॉज ऑल it is because of कि हमें कहि परिबो कि मे बी बिकॉज ऑफ द प्राइस एंड एनी ऑफ द रीजंस बट हियर दिस इज एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन. ओके सो पुनी हम बैक करबा एते डिस्कशन बेले नेक्स्ट आज हम देखिबा कि देयर इज अ न्यू चैप्टर वी विल गो फॉर दिस इज योर ग्लासियल लैंडफॉर्म्स, राइट? ग्लासियल लैंडफॉर्म्स जदि हम देखिबा कि कौन ग्लासियल लैंडफॉर्म्स रे जेमति काली हम पढ़ले लैंडफॉर्म्स बाय रिवर सेमति आज हम पढ़िबा लैंडफॉर्म्स बाय द ग्लासियल. अच्छा मोर नेक्स्ट क्वेश्चन हला कोठी एगुडा हुए वेयर दिस प्लेस हैपेंड ग्लासियर जो लैंडफॉर्म्स हुए कोठी हुए नॉर्मली को जगह रे हुए वेयर इट इज. यस सोरिया मितांजलि व्हिच एरिया वेयर डज इट फाउंड वेयर does it is found को जगह रे हुए glacial landforms we can say. Anyone can say of this one. सोरिया लिखुची सर मु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइथिली कटक अप्लाई करिवा पई सेठी गवर्नमेंट पियन रो बिल्कुल सोरिया आई अंडरस्टैंड दैट वन की गवर्नमेंट जॉब रे सेटा गोटे थाए बहुत बड़ गोटे समानकर माने गोटे थाए गोटे दबदबा थाए गवर्नमेंट जॉब रे. सो पियन माने एक्चुअली यदि तुम देखियो बड़ बड़ ऑफिस रे पियन माने ही मेन एक्चुअली ऑफिस चलांती फॉर योर इंफॉर्मेशन. ठीक है जी सोरिया. ओके वेलकम गायत्री. ओके गॉड ब्लेस. आज हेला सोरिया आज हेला तुम संगे जो जाइथिला एठी की कटक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे आज हेला एसओ हाई कोर्ट भी हमर एठी दिया होची एसओ हाई कोर्ट रो भी तो हमर फिजिक्स वाला तरफ रो भी दिया होची ट्रेनिंग आज जाइथिला सोरिया. अच्छा सो मते एटी आंसर मिले ग्लासियल लैंडफॉर्म्स कोठी हुए नॉर्मली एटी मु गोटे आंसर बोलची नॉर्मली ग्लासियल लैंडफॉर्म्स ता तमर कोठी हुए इट एक्सप्लोस इन द दीटा जगह हैला ग्लासियल लैंडफॉर्म्स और ग्लासियर डिपोजिशन. लैंडफॉर्म्स कोठी देखा जाए लैंडफॉर्म्स आर फाउंड टू प्लेसेस हैला आर फाउंड एट टू प्लेसेस दीटा प्लेसेस हुए that is at higher altitude, right? Higher altitude. Second, higher latitude.
दीटा जगह हुए हायर अल्टीट्यूड और हायर लैटिट्यूड दीटा जगह हुए हायर अल्टीट्यूड अच्छा थर्सडे जाइथिलो ओके ओके ठीक अछि सर दीटा जगह हुए हायर अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड माने कोटा उच्चता एलिवेशन जोटी अधिक एलिवेशन थाए सेही जगह रहइबो हला काहेकि ना सूर्य किरण पड़ी परे ना गोटे तमरो हायर लैटिट्यूड जानिबा अभी वर्तमान ग्लासियर हाउ ग्लासियर्स आर फॉर्म सर सब दिन क्लास वाइट रे होउची की सैटरडे रहिबो हला सैटरडे पर्यंत प्राय हमर जो देखियो जदी हमर वाइटी क्लास टा सब दिन रहे हला कि मुइडी कहि दोची गायत्री कि गोटे वीक आउ पुनी आ गोटे वीक हला एमति रही कि सब सब्जेक्ट गोडा हबो आज एई वीक रे मोर आरो वीक रे हला आउ जने मेंटेन कर रहइबो टीचर कर रहइबो सो प्राय सब दिन तमे एटी पाइबो आउ मु पुनी मु आज भी जदी कहबी ए जो वाइटी क्लास गोडा एटा कंप्लीटली गोटे ओसीएस सिविल सर्विस एग्जाम में इट्स एन फ्री गाइडेंस टू एवरीवन हला क्लास रे तमे जो देखिलो ए जो सब्जेक्ट गोडा ठीक अछि दिस इज योर कंप्लीटली we are maintaining the rituals means I mean we are following the syllabus and as per syllabus हमें cover करछु whether and खास करके I would suggest foundation batch बड़ा बहुत ही ज्यादा powerful होते हैं ये लोग ठीक है I mean in foundation batch normally we follow prelims cum mains subject prelims cum mains है ना दीटा को हमें follow करू prelims cum mains foundation batch right और इथरे तमरो ऑब्जेक्टिव संगे क्लास रे राइटिंग्स भी हुए प्रैक्टिस हियर इट इज ओनली प्रीलिम्स एंड हियर प्रीलिम्स फॉर ए मेंस रे यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच रे राइट ठीक अछि गायत्री हला एई वीक रे पुनी नेक्स्ट मंडे नु आउ जने मेंटेन कर से रहबो पुनी ठीक अछि नेक्स्ट पुनी हम देखिबा कि हाउ ग्लासियर्स आर फॉर्मड ग्लासियर्स माने केमति फॉर्म होनते हमें पुनी कहले कि जानले कि दीटा जगह अल्टीट्यूड लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड ठीक अछि लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड नेटवर्क में भी स्लो थिबो हला रज भाई मोर तो एटी ठीक अछि हमें विजिबल टू एवरीवन मोर तो बफरिंग होनी अच्छा गायत्री पचाजु सोरिया मितांजलि यू कैन आंसर टू गायत्री अच्छा नेक्स्ट देखिबा द फॉर्मेशन ऑफ ग्लासियर्स इज ऑलवेज रेस्ट्रिक्टेड टू द हाईलैंड्स हला फॉर्मेशन ऑफ ग्लासियर्स जदी देखिबा इट इज ऑलवेज रेस्ट्रिक्टेड टू द हाईलैंड एरिया को ही ऑलवेज रेस्ट्रिक्टेड हुए ग्लासियर्स पड़ा द परमानेंट स्नो फील्ड not affected either by evaporation or summer melting so एठी हमें कौन जानले कि glaciers माने is always restricted to the highland area ठीक अछि सब बड़े highland area माने higher elevations right highland area means higher elevations we are meaning at higher elevations right higher elevation को रहे then ठीक अछि then I would con रहिबो then another that is your higher latitude हला higher latitude हला higher elevation गोटे आ गोटे हला higher latitude ठीक अछि अच्छा बुझी होचरे समस्त को एवरीवन किछि लेखा आसुनी रे अच्छा सोरिया ठीक अछि अच्छा ठीक अछि ओके सो दीटा हम जानले अगेन परमानेंट स्नो फील्ड नॉट अफेक्टेड ईदर बाय द इवापोरेशन और समर मेल्टिंग फॉर एग्जांपल यार मुदेली सियाचिन हला और सियाचिन ग्लेशियर सपोज देली सियाचिन ग्लेशियर सियाचिन टा कोठी वेयर इज सियाचिन के कहि परियो वेयर इज सियाचिन हला और एटी देबी और आकु जदी मु देबी को जगह सियाचिन ग्लेशियर्स गोटे हला और लेट्स से नुब्रा वैली हला नुब्रा वैली लद्दाख हला लद्दाख एरिया तमे पाइबो हला नुब्रा वैली और सियाचिन एटा तमे पाइबो कोठी you will find all these things in your that is you will get it in the Ladakh ta कोठी Ladakh मु तुमको आगुरी भी शो करछ Ladakh is here this is your Ladakh this area it is your Ladakh एई जगह तमे एटी जदी देखिबो पॉलिटिकल बेसी तम क्लियरली टिके देखैबो इफ यू लुक एट हियर यू विल गेट इट हियर दिस इज नुब्रा वैली एंड सियाचिन फिजिकल बेटर देखिबो आई थिंक यस देखो एट है ना सियाचिन और नुब्रा वैली एटी देखैस तो सो अगेन विथ रेस्पेक्ट टू दैट वन जदी हमें देखिबा कि एटा सब बडे हायर अल्टीट्यूड हमें पाइला हायर अल्टीट्यूड राइट सो विथ रेस्पेक्ट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स द ग्लासियर्स फ्लो डाउनवर्ड्स नॉर्मली कौन हुए ग्लासियर सब बड़े एमती डाउनवर्ड फ्लो करे आमे कौन देखली ग्लासियर्स ऑलवेज फ्लो डाउनवर्ड ठीक अछि दीटा जिंस दिस इज योर ग्लासियर्स
फ्लो ऑफ ग्लासियर राइट फ्लो ऑफ ग्लासियर बेसिक जिनस गुड़ा आज मुझे कहबी फ्लो ऑफ ग्लासियर्स ग्लासियर सब डाउनवर्ड फ्लो करे है फ्लो ऑफ ग्लासियर डाउनवर्ड फ्लो ऑफ ग्लासियर ठीक है जी डाउनवर्ड फ्लो ऑफ ग्लासियर अच्छा मत कह जो ग्लासियर डाउनवर्ड फ्लो करुच्ची मन रख सब गोटे बड़ जिनस योर मेजर किए हेल्प करे द ग्रेविटेशनल फोर्स द gravitational force right the gravitational force works or helps enables kariye gravitational force enables है to the gravitational force enables glacier कहा को enable करे enables glacier to move downwards मन रख सबुठु बड़ जिन यही ताको हेल्प करे तल को जीवा ठीक अच्छे ग्लासियर्स एटा मन रख तो बेसिक्स फंडामेंटल ग्लासियर जेमती तुम देखुथो किछि दिन माने केदारनाथ रे जो ग्लासियर्स खसीतला माने आई मीन एबे किछि दिन तळे जो केदारनाथ की आई मीन उत्तराखंड रे की जो ग्लासियर्स जो एवलांचे आस्थिला एवलांचे माने योर दैट इज योर स्नोफॉल this is that is mainly because of one of the very reason is ki gravitational force help kare okay climate change is the another cause that helps but it hala major gravitational force right ठीक अछि जदि हम सेमते देखिबा कि with respect to gravitational force glacier flow downwards to the valley below right okay next usually कौन हुए usually glaciers are tongue shape basically कौन हुए glaciers माने थांती tongue shape रो हैला जीव shape रो tongue shape रो थांती they broadest at the source and become narrow downhill तुम एटी देखो हैला tongue shape रो जीव बळे थांती हैला broad एटी से माने broad रे थांती broad shape हैला आरंभ रे आ एटी थांती तमरो narrow हैला narrow कोठी थांती at narrow at terminal point next देखिवा the Gangotri glacier good evening Sankalp good evening how are you hela the Gangotri glacier India has retreating 19 meter per year at faster due to climate change now it is alarming Gangotri glacier बहुत जल्दी hela retreat करूछ Gangotri glacier अच्छा पुणी एबे हम जीवा लैंडफॉर्म फीचर्स जेमती रिवर रे हमें पढ़ी एरोजनल फीचर्स है हाईलैंड रे एरोजनल फीचर्स हाईलैंड रे सेमती ग्लासियर रे भी सेम जिंस ग्लासियर्स लाइक रिवर इडम कर लिखबे लाइक रिवर ग्लासियर्स डू है ग्लासियर्स टू फॉर्म्ड एरोजनल फीचर्स है एरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर erosional and depositional features at upper course at upper mountainous region and lower plane respectively मन रखो respectively मु लिखली माने erosional features रा करछि तमरो upper mountainous course रे आउ depositional features रा तमरो करछि तमरो lower mountain plane रे this is lower plane रे this is हैला lower plane रे करछि this is आ माने हैला आई सर सॉरी लिखुछि सर जूनियर क्लर्क रो पोस्ट बाहरी छि ऑल ओडिशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे हमें फॉर्म सबमिट करिया को जाइथिले सर पियन मते हुए सेमती सोरिया एमती हुए हैला मोस्ट ऑफ द टाइम रे ई जिंसटा हुए हैला सो डोंट वरी दिस आर द वेरी वर्तमान देखिबा ई जिंसटा बहुत होउची ओडिसा रे बट दिस इज द ट्रू हमको लढिया को पड़ियो हैला लढिबा छाडिबनी दिस आर लढिया को पड़ियो ठीक अछि यस संकल्प ठीक अछि ओके सो वर्तमान एठी डायग्राम देखो कि जेमती हमें जानले हाईलाइट पिक्चर जस्ट लुक एट द डायग्राम हियर यू विल फाइंड हियर लुक एट द डायग्राम में कोन देखुचो
कि एठी हाईलैंड एरोजनल फीचर्स है, दीज आर द एरोजनल फीचर्स केमती रहिबो। सो हमें कौन जानले एरोजनल फीचर्स आर ओरिजिनल फीचर्स दे आर फॉर्म्ड कोठी हुए हाईलैंड एरियाज हाई माउंटेनियस एरिया रे। तो एठी कौन हुए दिस इज द हाईलैंड माउंटेनियस एरिया। तुम एठी कौन देखछो जस्ट खाली पढ़ी दोछि देन मैं एक्सप्लेन करी। दैट इज योर पिरामिडल पीक इज वन इज देयर आरिटे टान एंड कोरी लेक आ गोटेला तमरो कोरी कोरी कम और सिर्क हैला ठीक अछि। आर्म चेयर एठी कौन लिखा है दिस इज योर आर्म चेयर शेप दिस इज योर आर्म चेयर शेप। सो नॉर्मली जेमती हमें रिवर रे काले हमें पढ़िथिले कि नदी जेमती तार यू नो थ्रू द पासेस से तार कौन फॉर्म करे जेमती तमरो वी शेप वैली फॉर्म करची हैला गर्ज फॉर्म करची वाटरफॉल फॉर्म करची कैटरेट फॉर्म करची लाइक सो आल्सो सेम थिंग इन द सेम मैनर द ग्लेशियर्स डू फॉर्म योर कोरी और सिर्क। लेट अस नो सिर्क कौन हुए एटी मु देखौची हैला एटी पढ़ी दोची गोटे आफ्टर द downslope movement of the glacier जेतले ग्लेशियर तळकु मूव करूची आफ्टर द downslope movement of the glaciers हैला इंटेंसिव सैटरिंग इन द ऑफलैंड स्लोप इंटेंसिव सैटरिंग होची। संकल्प लिखले ये संकल्प डेल्टा टा रिवर रे फॉर्म हुए रे संकल्प पितांजलि डेल्टा तमर रिवर रे फॉर्म में लोअर प्लेन कोर्स रे डेल्टा फॉर्म्ड इन द लोअर प्लेन ऑफ द रिवर कोर्स राइट। सो वर्तमान देखिबा कि after the downslope movement of the glaciers intensive shattering in the offland slopes due to erosion produce a large depression हैला large depression produce करे formed they are known as your कोरी। डायग्राम देखो एटी आमे आरंभ क्लास रे मु कोन कहितली कि एटी तमे देखुछो कि ग्लेशियर तमरो with the help of gravitational force ग्लेशियर ता तळु को जाउची हैला। सो एई जगह कोन अछि तमे ग्लेशियर एटी कौन रोचे ग्लेशियर तुम एटी देखुछो कि ग्लेशियर एटी डाउन स्लोप मूवमेंट करछे ग्लेशियर्स मूव इन द डाउन स्लोप मूवमेंट राइट डाउन स्लोप मूवमेंट ग्लेशियर एटी डाउन स्लोप मूवमेंट करछे जस्ट लुक एट हियर दिस इज द ग्लेशियर तळु पळेला पर एटी गोटे आर्म शेप रो गोटे खाली रहइबो राइट आर्म शेप रो गोटे क्लियर गोटे क्रिएट हो आर्म शेप रो राइट आर्म शेप रो एटी रहइबो आर्म शेप रो दिस इज सो एटा को कहा जीवो ए जो डिप्रेशन टा हला दिस इज योर शैलो डिप्रेशन आगो कहा जीवो दिस इज योर शैलो डिप्रेशन हला शैलो डिप्रेशन आर्म शेप दिस हला आर्म चेयर शेप एंड दिस इज नथिंग बट नोन एज योर कोरी और सिर्क ताको कहा जाय सिर्क कहबा दैट इज कॉल्ड योर सिर्क और कोरी ठीक अछि सिर्क और कोरी ताको कहा जाय एटा मन रखो हला परीक्षा रे एटा पचारंती जस्ट कर आईडिया पई दोछ। अच्छा पुणी कौन हम बेले बेले कौन देखा आउरे कौन देछि आरिटे देछि पिरामिडल पीक देछि जस्ट एटी लुक एट करो। अच्छा एई जगह कौन हो जतले जो खालुआ हे जिवो जतले एठी व्हेन वाटर अक्युमुलेटेड ताको कहा जिवो कोरी लेक और टार्न लेक एई जगह देखुछो तमे कोरी लेक और द टार्न लेक इट इज हियर जस्ट लुक एट हियर दिस इज नथिंग बट योर टार्न और द कोरी लेक एटा कहा जिवो व्हेन वाटर अक्युमुलेटेड हियर दैट इज योर टार्न और द कोरी लेक राइट। next come to the pyramidal peak कौन रोची हैला when two quarries cut back on opposite sides of a mountain हैला जेतरे दीटा कोरी कौन होचनी कट बैक इन द ऑपोजिट साइड ऑफ ए माउंटेन नी फेज रीज हैज फॉर्म्ड कॉल्ड एज आरिटेस जस्ट देखुचो दीटा कोरी फॉर्म हैला गोटे एपड को गला हैला आ गोटे एपड को गला हैला एडी गोटे नी फेज माने जोटे आरिटे माने हिड तो एडी खाली जानत हैला नी फेज नाई फेज ताको फॉर्म हैला दैट इज कॉल्ड योर आरिटे हम ओडिया रे जदी कहबा एटा आल्सो दिस इज एन रिज माने हिड जोटा हम कहंती ओडिया रे ताको कहंती हिड भी कहंती ठीक अछि हिड भी कहंती रिज दिस इज अ नाइफ शेप गोटे एपड पड़ले जेम दिस धर सपोज तमरो तीनटा हे गेला संकल्प देखले सर बावेल शेप बिल्कुल संकल्प बावेल शेप रो गोटे देखा हबो हला ग्लेशियर्स बढ़िया बढ़िया आज डायग्राम अछि डायग्राम केवल मु कर देबी हला डायग्राम सो तुमको माने हाइलाइट कर देबी इट विल बी बेटर। अच्छा धर तीनटा आडू पळेला ताले कोन होबो इट इज योर पिरामिडल पीक रहबो कोन इटी हम देखुचो हला पिरामिडल पीक आर लाइक ठीक अछि पिरामिडल पीक और आरिटे ताको कहबा ठीक अछि व्हेन
3 or more 6 cut back together. Pyramidal peak कौन होगा? 3 or cut back together. Angular horn shape called, that is your pyramidal peak is formed. So आरिटे हैला कौन? जेतले दीटा ग्लासियर पड़ोची. Pyramidal peak हैला कौन? तीनिटा ग्लासियर पड़े. माने तीनिटा. माने ए डायग्राम नु एपट गोटे गला आ गोटे पछपटु. सो कौन होबो? गोटे हॉर्न टाइप रो होबो. एमति देखा होबो. पूरा धारुआ टाइप रो, हॉर्न टाइप रो. That is nothing but called your pyramidal peak. ता माने क्वेश्चन पड़े जानिबो 3 साइड रु कटिची. राइट? Next come to your burst end. अच्छा मेसेज कले बफरिंग स्टार्ट हे होची. गायत्री मते लागुची तम एरिया रे समस्त करी प्रॉब्लम रे होची की समस्त कर प्रॉब्लम होची कि रे. ताले तमे गोटे काम कर, तमरो एरिया रे नेट स्लो अछि बोदे, सेटा मु कहबी हैला. सेटा तमे टिके चेक करनी. नंबर मागुची सूर्य मोर टेलीग्राम चैनल अछि. टेलीग्राम चैनल तमे जॉइन करि परिबो आशुतोष सर बोली. ठीक अछि. माय टेलीग्राम चैनल, दैट इज योर आशुतोष सर. तमे एटी जॉइन करिबो हैला. आशुतोष सर, यू विल गो फॉर आशुतोष सर टेलीग्राम चैनल. राइट? दिस इज योर टेलीग्राम चैनल आशुतोष सर तमे करि परिबो. ठीक अछि. विल बी कनेक्टेड देयर. ओके सूर्य. अच्छा एटा हम लिखली गायत्री हैला. टेलीग्राम आशुतोष सर लिखिबो तमे पाइ जिवो. ठीक अछि. अच्छा ठीक अछि. टिके गायत्री डोंट वरी. मते लागुची गायत्री जो एरिया रे अछि मते नेटवर्क सेतिर टिके स्लो अछि एंड बिकॉज ऑफ नेटवर्क स्लो ई प्रॉब्लम ता देखौछि हैला. अच्छा नेक्स्ट देखिबा हमर कोन बर्सकंड. बर्सकंड रे इठी देखो. दिस इज एन पिक्चर ऑफ बॉक्सकंड. ठीक अछि. बॉक्सकंड पिक्चर, जस्ट लुक एट हियर द बॉक्सकंड पिक्चर. कोन हुए बेले बेले एटा बहुत इंटरेस्टिंग टू नो हैला. ओके गायत्री. बॉक्सकंड नॉर्मली at the head of the glacier बेले बेले कौन हुए जेतरे ग्लासियर तळु को मूव करे. at the head of the glaciers when the glacier starts moving down slope, जेले ग्लासियर कौन करे डाउन स्लोप को तळु को आसे, crack develops and seems an opening or tearing of the glaciers. crack ता develop हुए, it seems an opening हैला. opening seems an opening or tearing of the glacier. जेमते ग्लासियर के चिरी पकैची हैला. tearing of the glaciers, this is known as your boxcund. एडी देखा बेले बेले कौन हुए ग्लासियर तळ जेतले तळु को बोला बे मन देकी सुनो. खाली मु डायग्राम रे बुझे दूछ. when the glaciers moves downwards normally, when the glaciers moves downward, एटी कौन होची glacier moves downward. ठीक अछि. rugged mountain एटा अछि. this is your rugged mountain लिखा अछि. this is your rugged mountain हैला. this is your rugged mountain wall. right? glacier एटी downward motions हैला. downward motions of glacier. downward motion of glacier. downward motion of glacier. downward motion glacier से कौन हबो सर पीक रे लुसेंट फोटो की किछि अछि कि टेलीग्राम लुसेंट पढ़न देखा. वर्तमान मु कभी सिविल सर्विस प्रिपेयर होछ लुसेंट छाड़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, जीसी लियोंग पढ़ो, क्लास रे अटेंटिवली सुनो. बहुत मु तुमको गारंटेड दोची ज्योग्राफी रे हैला एबव ओपीएससी लेवल तमे एग्जाम अटेंड करि परिबो. दिस इज माय गारंटी. ठीक अछि. लुसेंट बेसिक्स बय पढ़ो एनसीईआरटी आउ जीसी लियोंग हैला. एनसीईआरटी पढ़ो सिविल सर्विस कथा मैं मु कहूछ. अच्छा सो इटी डाउनवर्ड मूवमेंट कहले कोन हो रगेड वाल रे एटा चिरी हे जिवो. दिस इज यू नो टर्न. एटी तमे देखुछो चिरी हे गेला. एटी देखुछो तमे दिस इज द चिरी हे गेला. दिस इज टर्न हैला. दिस इज योर टर्न. ए जगह टर्न हैला. दिस इज राइट टर्न. आउ जगह एटी कोन हो दैट इज एन प्रेसिपिटियस स्लोप इज देयर. दिस इज योर प्रेसिपिटियस. दिस इज प्रेसिपिटियस स्लोप्स एटी जगह रहछ. दिस इज नोन एज योर आल्सो क्रेवासेस एटी कहा जाय हैला. ठीक अछि. आउ ई नॉर्मली कोन हुए ई जो बॉक्सकंड एई बॉक्सकंड गुडा कोन हुए माउंटेन क्लाइंबर जो माने देखुछो माउंटेन क्लाइंबर एक्सीडेंट हुए बिकॉज ऑफ दिस बॉक्सकंड जो माने जो एंकरिंग पकांती पाइनी पड़ी जाती. बहुत सारा एक्सीडेंट जोटा हुए हमरो हैला वर्ल्ड रे, वेदर इट इज माउंट एवरेस्ट और कांचनजंगा और केटू हैला सब जगह रे एथि पई रेस्पोंड. आउ एथि पई को समर रे एटा मेल्ट करे. ठीक अछि. बॉक्सकंड starts moving down, crack develops and seems opening towards steering the glacier. This is known as your boxcund. बुझिएला एति की
नेक्स्ट नेक्स्ट कम टू द यू शेप वैली हैला एतिके हम एरोजनल एटा लास्ट तापर हम डिपोजिशनल पढिबा यू शेप वैली टा नॉर्मली जेमति देखो जेमति तमे रिवर रे पढिथिलो कोन वी शेप वैली सेमति ग्लासियर्स रे कोन वे डेवलप करे दैट इज योर यू शेप वैली हैला डेवलप बाय योर क्रिएटेड बाय ठीक अछि क्रिएटेड बाय ग्लासियर एटा मोडी लिखि दिबे और क्रिएटेड बाय ग्लासियर जेमति तमे रिवर रे वी शेप करथलो एटी सेमति तमरो यू शेप वैली रहै सी सूर्यलोक से टेलीग्राम पिक रे सर आपन को टेलीग्राम पिक रे लुसेंट बुक रो फोटो अछि की आपन को टेलीग्राम लुसेंट बुक रो अरे हेडा मो फोटोडा पा अरे सूर्य से बुक रे जो फोटोडा अछि ए जो टेलीग्राम रे हेडा मो फोटोडा पा लुसेंट बुक रे कई फोटो हो अच्छा मु लुसेंट बॉय लेकिनी हला अच्छा ओके अच्छा ओके नेक्स्ट देखो नाउ वी आर कम टू द दिस सूर्य मत लागु सूर्या को बोधे तू जाइथलु जो हाई कोर्ट मत लागु सेइथरे किछि बोधे कहिचंती से जो एते बोधे किछि तते से पियन बोधे बेसी किछि कहि देछि हला तू मो फोटोटा को लुसेंट बॉय रो फोटो कहउछ तू अच्छा देखो सो नाउ कम टू हियर यू फाइंड लाइक योर रिवर वी शेप रिवर जेमति तमरो वी शेप करछि सेमति एटी के करछि वी शेप लाइक योर रिवर ठीक अछि रिवर एटी वी शेप करछि एटी सेमति के करछि ठीक अछि सो यू शेप वैली एटी हम कोन देखिबा द यू शेप वैली हला यू शेप लिखली यू शेप हला यू शेप वैली are produced due to the erosional features erosional work done by the glaciers the erosional works done by the glaciers right you say valid ठीक अछि सर मु आउ को ग्रुप रे भी भूल रे जॉइन कर देली सर्च रे अच्छा अच्छा ओके ओके नो प्रॉब्लम ठीक अछि सो यू से वैली तमे देखिलो are produced due to the erosional work done by the glaciers you say valley तमे देखु छटे सिंपल you say valley तमे खाली देखो steep walls these are the steep walls हला steep walls so this is all about the erosional features you are produced by your glaciers हला glaciers वर्तमान देखिबा जेमती रिवर तमरो करूतला हला एटा हला तमरो हाईलैंड एरिया रे तमरो erosional features हला सेमती लो लैंड एरिया रे कोन हो डिपोजिशनल वर्क करिवो हला लो लैंड एरिया रे डिपोजिशनल एरिया सो वेरियस लो लैंड फॉर्म्स फीचर्स आर कोन लो लैंड फॉर्म्स लो लैंड एरिया रे वेरियस लो लैंड फीचर्स आर roche mountainy crag and tail erratics हला roche mountainy crag and tail erratics drumlin eskers terminal moraines and outwash plains ए ना गुडा सु मन रखिया को हला केवल आज बेसने खाली डायग्राम देखि खाली हम तुमको कहि देबे हला सो एठी हम जानले केमती यू शेप वैली तमे देखिलो बॉक्स कट देखिलो देन ए पिरामिडल पिक एथरे सब देखिले हम राइट सेमती देखिबा कोन क्रैग एंड टेल कोन होची क्रैग एंड टेल व्हाट इज दैट वन ठीक है पानी पी दो रे जस्ट सेकंड देखो डायग्राम ता देखो होची क्रैग एंड टेल प्रथम देखो रोचे माउंटेन नॉर्मली रोचे माउंटेन कौन हुए एटी देखो रोचे माउंटेन इज एन एरिया राइट
is an one type of geomorphological features which normally formed in the when the glaciers makes erosional features. I mean you're at the lowland, erosional features at the lowland है एति मन रख है लोलैंड एरिया रे भी रचे माउंटेन करे रचे माउंट रे कोन हो एठी मु डायग्राम रे बुझेई दोची खाली एति देख रचे माउंट रे कोन हो दिस इज द ए जो पटरे देखुछो दिस इज द मोशन ऑफ ग्लेशियर मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर ओके मोशन मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर माने ए डायरेक्शन रे तमर ग्लेशियर मूव करछ मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर ए डायरेक्शन जेतरा से ग्लेशियर एपटे मूव करे ए डायरेक्शन रे कौन हुए एपट साइड टा तुम स्मूथ ठीक अच्छे एपट साइड टा स्मूथ रहे एंड दिस साइड रॉक वॉल दिस साइड दिस इज योर रफ ठीक अच्छे एरोडेड वॉल ये कौन लिखा एरोडेड वॉल है एरोडेड वॉल दैट इज रफ है दिस इज योर रफ वॉल एरोडेड रफ और it creates कौन करे it creates steep slopes ला steep slopes ए पटे खाली एतिक मन रख है steep slopes normally एटी देखुछो ठीक अछि एटा कह जाय रचे माउंटेन बेसिकली यूरोपियन लैंग्वेज एगुडा सब रचे माउंटेन इट से फ्रेंच रे कोई रचे माउंटेन कह जाय हला आ बेले बेले आकु स्किन ऑफ विग ऑफ शिप विग बोली कह जाय मेंढा मेंढा बेले एमति देखाव ए जो जिंसोडा ठीक अछि शिप विग भी आकु कह जाय रचे माउंटेन ठीक अछि टेलीग्राम चैनल आसुनी गायत्री स्पेलिंग ता एथरे देखिनियो मु स्पेलिंग ता बाहर कर दोजरो टेलीग्राम चैनल रे गोटे मिनिट रही था देखो स्पेलिंग एथरे मोर फोटो अछि आस्तोष सर एटी देखि दबो कोडी में लिखि दिले एटी देख एटी मोर नेम सेम अछि ए एस स्पेलिंग ठीक से करो ASHUTOSH मन रख माउथ लिखुची हला स्पेलिंग ठीक से लिखि दोची ASHUTOSH पुनी कैपिटल एस आउ स्मॉल जेमती एटी कैपिटल एटी के एटा हला टेलीग्राम चैनल एड्रेस एटी भलो भाबे देखिनियो एड्रेस हला पूरा क्लियरली देखौची हला ठीक अछि गायत्री एटी देखो स्पेलिंग एटी ए बडो आउ एस बडो एटी आ बाकी सब एटी स्मॉल लेटर ए भी दुटा स्मॉल लेटर आउ ए आउ एस बडो जेमती लिखाई सेमती लिखियो ठीक अछि पूरा कैपिटल ने टाइप कले आसीबनी कि पूरा स्मॉल कले आसीबनी हला और सोरिया तू कोडी देखिलु लुसेंट रो फोटो मोर लुसेंट क्या आश्चर्य नेक्स्ट हला सो एटी हम देखले रचे माउंटेन नेक्स्ट कम टू द क्रैग एंड टेल आ गोटे कोन हो दिस इज आल्सो एरोजनल फीचर्स दैट वर्क्स इन कोडी एरोजनल फीचर्स पुनी लोलैंड एरिया रे एटा भी देखा जाय एरोजनल फीचर्स राइट कोन कोन क्रैग एंड टेल जदी देखिबो क्रैग एंड टेल भी गोटे तमरो एटी गोटे तमरो this is also crag and tail रे this is also and a lowland erosional features एटा भी a lowland erosional features मन रख हला crag and tail भी कह जाय lowland erosional feature right ए जगह कोड भी this is the motion of the glacier motion टाइटा रोचे this is the motion of the glacier okay and this is your tell ए पटे this is your deposition occurs ए जगह deposition कौन डिपोजिट करे deposition occurs कौन डिपोजिशन करे ग्लेशियर ऊपर जो आनी थो बोल्डर क्ले आनी सु जमा करियो सेठी सर आपका चैनल पाइलिनी जो चैनल पाइली सेथरे लुसेंट बुक रो फोटो अच्छा ओके ठीक अछि सूर्य ठीक अछि एटा देखिनो भाई ए एड्रेस टा मुझे देली सोटा देखि दो हला स्पेलिंग ठीक से रख जोटा हम देखिली सेथरे हेजु एटी कोन हबो डिपोजिशनल अकर्स एथरे नॉर्मली कोन हबो कोन डिपोजिशन वे दैट इज योर बोल्डर क्ले हला बोल्डर क्ले देखो तम माने एटी को तुम डायग्राम खाली रे करछ बट जदी क्लास रे तमे जदी माने जदी हमर जो फाउंडेशन बैच हो अलगा जगह रे सेथरे
systematically syllabus wise सब जिनसे cover होगा. These are all the free only overall गोटे surface guidance दिया होची है ना, but class रे in detail तमे पढ़ियो सब जिनसे ऊपर ठीक अछि. And this is what the very purpose कि YT रे गोटे awareness about to know those who are serious candidate, those who are aspirant, those who are many having not having से माने पकरे माने I mean they have not idea माने केमती एग्जाम इनफॉरमेशन न थाए YT माध्यम रे से जिनसडा माने इनफॉरमेशन पहुंचा जाए ठीक अछि. एंड इथरे भी बहुत जिनस तमरो यू विल गेट टू द कवरेज आल्सो. सो बोल्डर क्ले एटा गला क्रैग एंड टेल. नेक्स्ट एराटिक्स. नेक्स्ट कम टू द एराटिक्स. एराटिक्स बेले बेले कोन हुए, एराटिक्स माने कोन नॉर्मली हम केमती बुझिबा, व्हाट डू यू मीन बाय द एराटिक्स. नॉर्मली बेले बेले कोन हुए कि जो माने कहंतरे हम बेले को कि एराटिक वेरी एराटिक पर्सनालिटी माने किछि तालमेल नाही हैला, माने तमे गोटे क्वेश्चन पचले सिको आंसर आ गोटे दोछ, दैट इज कॉल्ड यू नो एराटिक. सो एराटिक नॉर्मली हैला, एराटिक माने हैला मिसमैच हैला, मिसमैच. एराटिक माने मिसमैच or not coherent or not fit हैला, not fit, mismatch or not fit. ता माने कोन ए जो बेले बेले कोन हुए ग्लासियर जेतले तळ आडू आसे, व्हेन ग्लासियर मूव्स डाउनवर्ड नॉर्मली इट डिपोजिट्स हैला, माने डिपोजिट करे ए जो बड़ पत्थर. सपोज ए जो पत्थरटा मु केमती कहूची, दिस इज योर ग्रेनाइट मास हैला, ग्रेनाइटिक मास, ग्रेनाइट मास राइट. औ दिस इज जो जगह रे जमा हिची, that is called, suppose this is called your limestone area, limestone area. So this is we can call the erratics, but that when the glacier deposited this granitic mass, माने granite माने कोन igneous, granitic mass माने कोन igneous rock, तमे पढिछ आगुर हम पढिछंती igneous rock ठीक अछि. igneous rocks टा limestone माने चूर्ण पत्थर जगह आसी जमा हिची, तमन की आनी की थोइछे, की आनी की थोइछे. This is all, that is what the glaciers long back it has deposited this one, and sei jugu seta hochi erratics. बुझी हला, is it clear? गायत्री कोची सर टाइपिंग कले पीडब्ल्यू आप रे आछी. हां बिल्कुल बिल्कुल ठीक अछि. ओके 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 ठीक अछि गायत्री. So this is called your erratics. Next देखो, that is called your drumbling. What is called the drumbling? So normally drumbling रे हम कोन देखिबा, what do you mean by, yes हला. हां एबे गायत्री स्पेलिंग टा ठीक लिखली, एबे सोरिया देखिने गायत्री जो स्पेलिंग देछि that is correct हला. अस्तु सर, ओके टेलीग्राम, that is. Now next to the come to the drumbling. Drumbling means this is your basket egg topography. somebody कोन देखुछो, drumbling is also known as your basket egg topography. This is known as your basket egg topography. This is called your drumbling. basket topography कोन तमे कोन देखुछो, this is like this one, तमे भलो देखो basket माने बेले बेले कोन हुए, मैं डायग्राम टा खाली कर दोस तमे आरी बुझिजो. Normally what happened, these are called the boulder clay depositions of एडा सब हला depositions of depositions of boulder clay by the glaciers हला, deposition of the boulder clay of the glaciers. ठीक अछि. deposition of the boulder clay, एटी तमे देखुछो boulder clay एगुडा सब देखुछो, एडा सब माटी भलिया जमा हिच, एगुडा सब माटी भलिया जमा हिच. This is nothing but the depositions of the glaciers of the boulder clay in the downward lower plane रे. जते lower plane रे कोन हो glacier आनी की जमा करछ. अच्छा तले जमा करछ केमती, it looks as if कोन देखा जे, it looks as if हैला, looks as if this shape, the shape of these boulders, एटु लिखि दोची, the shape of these boulders
looks as if looks as if baskets of egg हैला एटा तोर परीक्षा रे ए जिंस पचारि ठीक अछि हैला एटा हला तुम को जाय आकु कोन को जाय ड्रमलिन्स ठीक अछि ओके नेक्स्ट देखो एस्कर्स sir I want to start preparation for the OPSC exams from starting. Should I purchase this batch? Actually this one is your YT, right? This one is your YouTube channel, ठीक है जी YT channel. YT channel we are giving the free guidance. If you want to purchase the batch, so I would suggest you will go for this one, ठीक है जी. Here are the many batches जोटा कि हमें कहूँ. Here are the many batches where we find. Generally I suggest you जदि जो माने पूरा new beginner अच्छा, I will go for the foundation batch, because foundation batch रे तमे सब बड़े माने prelims का mains both approaches there. Foundation batch माने मु बुझे दूची one by one. It is for the prelims का mains batch. Means in the class we will follow both objective and writing and subjective. Both objective and subjective both will be follow. Right? Practice. Normally this rituals I follow in the class, and I will be taking your geography, environment, your disaster management, essay, current related things. There are four, five things will cover. I will take the subjects in both prelims and mains. But foundation batch रे बहुत जिनस तुमको इथरे तमे पाई परिबो. Next, if you go for the only prelims जदी होची, माने this is a variety का माने जो माने beginner और जो माने पूरा freshly idea बची नथा है, then foundation batch is always healthy. Those who want to दीथर तीनथर mains देइचन खाली practice ପାଇଁ दरकार engagement ପାଇଁ, I would suggest will go for the Aakrosh batch. That is also good. If you go for the unity integrated batch, that is also good for the आगे prelims पढ़ियो तापरे mains तमरो रहइबो. Right? So I would suggest you will go for the this among these three, your choice now, but I would suggest foundation batch is always healthy if you are a beginner, right? So vartman ame dekhile this is the drumlins. Now comes to the askers, right? Now comes to the askers. Askers kon rahe normally. Okay, welcome dear. Normally askers, these are the your depositional of your glacial features. जेतले glaciers normally कौन हुए? If you go to the Norway, suppose ठीक है diagram में देखो, if you go side the Norway, just look at here, this is Europe, you find this is the Norway. एई जगह तमे देखु जतले Norway side रे ठीक अछि. So एटी normally तमे कौन देखछो Norway side रे तमे देखछो एटी deposit माने एटी जगह glacier कौन पूरे deposit lowland रे हला Norway. So Norway what happened? Norway side रे, right, there is an depositional features. So jitla glaciers when etim kochi askers, they are the sinus color ta tike bol dekha. Let me change the color. They are the sinus rees, है ना? Sinus rees of accumulation of boulder clay, है ना? Boulder clay, ठीक है, and other eroded sediments and other eroded debris, है ना? Glacier आने की सेत्रे जमा करता है केमती यदि पहाड़ हिडो बढ़े, and it looks like this one, it looks like this one, ए बड़े भाବରେ जमा करता है. If you go to the higher latitudinal countries like your many Scandinavian countries, if you go to the Norway, Finland, Sweden, Ireland, your so Scotland, ये सब जगह तमे पाइबो, ठीक अछि, you will get it this one, ठीक अछि. ओके सर आ गोटे हमर कोन अछि ता परे नेक्स्ट एठी आ गोटे जिंस कहि दोछि. आ गोटे जिंसटा एठी मो छाड दिछि, जस्ट एठी गोटे लाइन में कहूछि, बड़े बड़े कहवा जाय आउट वाज प्लेन, ठीक अछि, एठी मो लिखि दोछि आउट वाज प्लेन, राइट. आउट वाज प्लेन कोन रहे
outwash plains. Outwash plains are basically they are the terminal your landforms, mane landform features, terminal landform features in glacial, right? In glacial depositional area, glacial depositional areas or regions, गोटे वाटर आउटवाश प्लेन बेले कह जाए गोटे लाइन रे लिखली टर्मिनल लैंडफॉर्म्स दिस आर द हला टर्मिनल लैंडफॉर्म फीचर्स राइट एठी कोन देखा जाए ए आउटवाश प्लेन रे हला जोटा कि जतले ग्लासियर टा जाई कि मेल्ट जाई कि जॉइन हुए कोठी सी पाखरे एठी गोटे जगह देखा जाए कोन केम्स हला केम्स केटल होल्स एडा सब आउ कोन फीचर देखा जाए केम्स केटल होल्स ए सब जगह रे एगुडा भी देखा जाए हला आउटवाश प्लेन सॉरी लिखुची सर अननोन फिजिक्स वाला रा कोर्स आउ कहार भी बिकॉज कोर्स प्राइस सब ओके 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 अच्छा ठीक अछि तो एटी हम देखले केम्स आउ केटल होल्स हमें देखुछो केम्स आउ केटल होल्स केम्स हला these are the small mounds खाली मन रख these are the small mounds ठीक अछि these are the small mounds we can say these are the small mounds of gravels हला some small mounds of your gravels and ठीक अछि and sands small mounds of gravels and sands ताको कहा जाय kettle hole कोन this is your kettle hole कोन हमें कहि परबा what do you mean by the kettle hole right kettle hole माने say a outwash plane रे there is a small holes deposition so small holes ठीक अछि small depression यदि कहबी small depression where water deposited ठीक अछि एति देखिले हमें हला small holes where water deposited kettle holes ठीक अछि सो हमें एटी कोन कवर कले टोटल ऊपर हमें एटी कवर कले हला जदी देखिबा ग्लासियर्स लैंडफॉर्म्स एरोजनल लैंडफॉर्म्स हमें कवर कले एरोजनल लैंडफॉर्म्स रे सिर्क्स राइट एटी तमे देखो सिर्क कवर कला आउथर हम कहूची सिर्क कवर कला सिर्क कम एतरे देखिला हमें राइट सिर्क कम कोरी एगडा सब हमें कवर कले जोटा कि एटी एगन आउथर हम कहूची सिर्क खेला तमर आर्म चेयर हला एथेरे पानी जमे ताकि कहा जाय टार्न आउ आरिटे आउ पिरामिडल पीक भी जानले नेक्स्ट हम देखिबा वी हैव आल्सो कवर्ड द box kund जोटा हम कहले box kund is the area where where we found there is a melting during the summer melting the glaciers that there is a tearing of the glaciers will find that there is a tearing of the glaciers and because of this box kund many of your the mountain climbers their mishap happened for the mountain climbers then the news will found get it in the news that either in the Mount Everest Kanchenjunga बहुत सारा mountain climbers माने गली पड़ती because of this box kund when the anchoring ऊपर को पकांती चढ़ी चढ़ी का जिबे so ए box kund जो accident हुए हैला this is why I am giving because not theoretically it is not enough that you can understand if you give an example it will your understanding will be much broader and it will be comfortable you are comfortable for that one right next this is your U-shaped valley this is an erosional features जेमते river V-shaped valley करथला हला V-shaped by river valley river erosion हला एडम लिखले V-shaped valley by a river सेमते U-shaped valley by your glaciers depositional features हमें देखले erosional सला depositional features हमें देखले roche mountain is the areas where this is an ship wig normally this is an erosional features in your lowland area then your crag and tail एटी देखले next your erratics जोटा हम कहली there is a mismatch of
the the boulders, deposition boulders, and where it is deposited. जदि जेटा हम कहली this is granite or limestone area है ना, granite deposition, granite boulder in the limestone area. Next, drumlins कहली, drumlins these are the boulder clays, it looks like an basket of egg topography, drumlins को कहते. Eskers are the sinus ridges है ना, जो कि बोल्डर को जोटा कि साइनस मूवमेंट अंका बंका एमती हेकी डिपोजिट करंती है ना. ठीक अछि, आउटवर्स प्लेन हम पढ़ले केम्स केटल होल्स आउटवर्स प्लेन जोटा कि टर्मिनल पॉइंट एटा रहै पारे. किछु क्वेश्चन एना प्रैक्टिस करिवा. ओके ओके प्रैक्टिस किछु करिवा. गोटे क्वेश्चंस देखिवा. देखो एना करो. The box current कला पर हम छाड़. The box current are found in which part of the glacial movement? को जगह तमे देखियो. The box current are found which part of the glacial movement? Upper mountainous region, middle of the glacial motion, हैला, middle of the glacial motion, downward motion of the glacier, lower mountainous region. को जगह देखा जाए. In which part of the glacial motion? भाभी जी ने आंसर दिया. संकल्प कहला ए, गायत्री also A. Yes, बाकी everyone. Okay, maximum समस्त कोचो upper mountainous region. Answer जदि हमें देखिबा, it is neither D, neither C, neither B. A is the correct answer. मन रखो. A is the correct answer हमें जान ले. Box current जोटा कि तुम्हारा upper mountainous region में देखा जाए normally, right? Next. Eskers are glaciofluvial origin. मन रखो. आउटे पूर्व हम पढ़थिले. Eskers are normally the glaciofluvial origin. Which one of the following statements are characterize them? मन देखि पढ़ो. They are long, narrow sands of ridges of sands. They are small, irregular. It is U अच्छी. Irregular U अच्छी बोल रहे. This is small, irregular mounds of bedded sands. They are small alluvial cones. They are flat top terraces. किए कहि पारि. संकल्प लिखिला, सूर्य लिखिला. सूर्य कुछ बी नुह ताले कोन हो. संकल्प रो बी, सूर्य कुछ बी नुह. अच्छा, नेक्स्ट सूर्य ताले कोटा. गायत्री, व्हाट इज योर आंसर? संकल्प इज ए बी, ए दोचो बी दोचो. अच्छा, ए बी भीतर कंफ्यूजन. बाकी गायत्री समस्त पार्टिसिपेट. आई वुड आस्क एवरीवन टू पार्टिसिपेट. ए सब क्वेश्चन आसी सारछि. ए बी भीतर कंफ्यूजन मु देखु. मैक्सिमम ए कहउचो, बी भी कहउचो. एक्चुअली जे तुम एस्कर्स देखिबो, एस्कर्स आर बेसिकली हैला, they are not D, C, B. आंसर हैला A. long narrow sands of sinus ridges. तमे आउटे पूर्व तुम कोन कहिथिल? आउ टिके पूर्व हम कोन पढले? एटा हैला मेन, एटा हैला क्लू. साइनस रीज मन रखो. They are the sinus ridge. long narrow sinus ridge. हैला, माने साइनस माने को बळे ए बळे. साइनस कर्व, साइन कर्व माने ए बळे. ठीक अछि. सो आंसर इज योर A. थर्ड क्वेश्चन हैला, ए दुटा क्वेश्चन कर दबा. Arites are the sharp ridges which develop between the adjacent cirques, roche mountain, medial moraines, then your U-shaped valley. की कहि परिबो? Arites are the sharp ridges which develop between the adjacent कोठी हुए. cirque भितरे, roche mountain भितरे, medial moraine भितरे, U-shaped valley भितरे. सूर्य कहछि सर मु वन रो आंसर बी देथिले. अच्छा हो ठीक अछि. तो अच्छा सूर्य कहछि मु वन रो आंसर बी देथिले. अच्छा बाबा ठीक अछि. ओके, बी हबनी. देखो एटी जो कहउछु बॉक्स कर्न एट द मिडिल. इन व्हिच पार्ट ऑफ द ग्लेशियल मूवमेंट बॉक्स कर्न आर फाउंड हैला. ठीक अछि. जनरली अपर माउंटेनियस रीजन ने देखांते. मिडिल ऑफ द ग्लेशियल मोशन रे वेनी. मिडिल ऑफ द ग्लेशियल मोशन रे कोन हुए? मिडिल ऑफ द ग्लेशियर जो मोशन करे मिडिल रे सेटा क्रैक हे जाय. जो क्रैक टा डेवलप हुए मु बुझी परछि. सेटा मिडिल ग्लेशियर रो मिडिल पर्सन हेटा क्रैक टा हे जाय. किंतु अपर माउंटेनियस दुईटा जिंस अपर और लोअर. मिडिल किसी ना था. मिडिल रे जोटा थाए सेटा कोन हुए? ग्लेशियर रो मिडिल रे क्रैक टा डेवलप हुए. बुझी हला सूर्य हला. ए जो मिडिल ग्लेशियर सेतरे कोन हुए? क्रैक टा जो डेवलप हुए इन द मिडिल पर्सन रे. से जो कंफ्यूजन हे होतो. ठीक अछि. ओके, क्लास कले ही बेसी जिंस क्लैरिटी रहइबो. क्वेश्चन कले
अच्छा एटा समस्त आंसर दोचो ए सिर्क्स बोली आंसर दोचो यस इट इज करेक्ट सिर्क्स इज द करेक्ट बी सी डी आंसर हबनी इट इज आंसर इज योर ए ठीक अछि लास्ट क्वेश्चन the catchment area of the drainage basin delimited by the divides known as kali river ame padithile wind gap watershed water divide watermark catchment area मन रखो river catchment area जोटा कहे drainage basin delimited by the divide कौन कहा जाए तक delimited by the divide wind gap कहा जाए watershed कहा जाए water divide कहा जाए watermark कहा जाए catchment area of a drainage basin delimited by the divides समस्त कोचो वाटर शेड बी मला वाटर शेड कोचो ए कोचो विंड गैप कोचो किजण कोचो हला वाटर शेड कोचो ठीक है कैचमेंट एरिया देखो एटी जदि आंसर देखिवो इट इज नीदर ए नीदर बी नीदर डी आंसर इज योर सी दैट इज वेरी सिंपल वाटर डिवाइड वाटर डिवाइड ही मेजर कौन करे कैचमेंट माने के रिवर कैचमेंट एरिया माने जेमती फॉर एग्जांपल गोटे पहाड़ आला दिस इज हला पहाड़ रो तमरो ए पाखरे भी पानी रहउची ए पाखरे वाटर डिवाइड गोटे तमरो गोटे एठी गोटे कोन हबो गोटे गोटे नदी टे एंती बाहरी गला चला एठी भी वाटर कलेक्शन करची एठी भी से कलेक्शन करची एठी भी कलेक्शन करची एठी भी कलेक्शन करची सो दिस इज कॉल्ड द वाटर डिवाइड एंड कैचमेंट एरिया इज द होल टोटल ठीक अछि एटी जो देखछो वाटर शेड एरिया दिस इज द कंप्लीट वाटर शेड एरिया कैचमेंट एरिया टोटल एटी रिवर कैचमेंट एरिया के वाटर शेड नेकी तळुक से आसले सो दिस इज नॉर्मली कॉल्ड एज योर वाटर डिवाइड कैचमेंट एरिया ड्रेनेज बेसिन्स हैला सो आंसर इज योर सी ओके ठीक अछि ताले आज पे एतिकी सो थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीवन पुणी हमर पुणी देखा हबो हैला पुणी आगु पुणी देखा हबो पुणी विथ योर अनदर नुआ टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी रे खाली गोटी रहला एलियन तापर हम स्टार्ट करबा पुणी योर क्लाइमेटोलॉजी रे से अनुसार करियो बट मु तुमको ए गोटी जिंस कहबी कि आई एम रियली थैंकफुल कि रज दिनटरे समस्त पाठ पढिया कस इज रियली हैप्पी हैला सिविल सर्विस तेल जो माने एग्जाम दियंती मन रख दे आर वेरी रेस्पोंसिबल एंड आल्सो सीरियस कैंडिडेट हैला समय को उपयुक्त करबा निश्चय जरूरी अगेन I will tell those who are having the serious candidate जो मैंने रहीचो I will ask definitely this Sarv Saksham batch will help you out right जोटा कि foundation batch this will help you out and also Aakrosh for the prelims एटा रहला foundation batch Sarv Saksham रे Aakrosh prelims and unit integrated जोटा कि रहला tomorrow your prelims come mains this will help you out give you new directions and fulfill your all dreams and give you a 2-year commitment also so thank you so much thank you everyone Thank you everyone for your patience and being stay with me. Thank you all. Next week रे संकल्प तुमको इंटीमेट हे जो आसी जो हला मो पाखरे भी से जिंसरा खबर नाही नेक्स्ट वीक रे हबो कि नहीं बट जहां भी जो तुम इंटीमेशन पाई जो ठीक अछि मते भी जणा नहीं एक्चुअली आई डिडंट गेट द इंफॉर्मेशन तुमरो हे जो तुमको भी नोटिस हे जो ठीक अछि Thank you so much. Thank you everyone. Take care. Happy Rajo to all. Rajo re pitha khaibo, bullibo, but be safe, stay safe. Thank you all. Good night. Thank you all. Thank you. Have a good day. Thank you.